Okay. So that's how this happens, and the basic concept of the propagation algorithm is that if you have the error here, and this is your output neuron, and this weight you want to adjust this weight, then you simply derivate your weight with respect to, and this would be a partial derivative with respect to the weight W. And here, because the error is directly generated and the weight is basically directly connected to the output neuron, therefore this derivation is quite easy. You can easily calculate this derivation. There isn't any issue here, because let's say here you have got the actual output, I call it O A, and you have got the target output. Let's say if that target output is OT, then the actual output is expressed in the form of this weight, because that would be the input that you have at this level. And let's say the input that you have at this level is input, uh, let's call it, uh, let's say input N, if it is the nth neuron. And this is your initial neuron that you have got, and here you have the input x1, then this input, and you have some intermediate neurons here. So the input here goes into this neuron, and output comes here. This output becomes an input to the next neuron, and the output of the next neuron becomes an input of the future neuron. So here you will have an input, and this neuron would have some output, and that output is primarily the input of this particular neuron. We call that input as IN, and IN is basically the input, and then this input basically is generating this output, and this output is then weighted with respect to this weight and goes into your final output neuron. So the output here, which is OA, is a direct function of this weight that we have W. So if I have this error expression, which is basically OA minus OT, OA is basically a function of the input to this neuron. The input to this neuron is the output of this neuron. So the input to, let's call this as the pth neuron, is the output of this, you can call it the tth neuron. Okay. So the output of the tth neuron is the input to the pth neuron. So, and that translation is with respect to this W. So OA here is a direct function of W. So this is a direct function of W plus the output of the tth neuron that you have got here. Okay. So, and now if I put it in the error expression, the error expression becomes a function of this W weight. So this would be this minus OT. Remember the small t here, the small t here is representing the target. Okay. So now I can take the partial derivative of this with respect to weight, and I can actually find out an expression that I can use for the weight updation. So for a neuron or a weight that is directly connected to the output neuron, it's not a problem. I mean, you can easily find out that the error is a direct function of the weight. So here you have the output neuron, and here you have the input coming from another neuron, and there is a weight attachment here, and here you can calculate the error. And this weight here is basically directly connected, or can be expressed directly in terms of, or the error can be directly expressed in terms of this weight.
Okay, so therefore this derivative can actually be found. Okay, so whatever that derivation is, you can actually, if you are interested, you can go through that derivation, that how this partial derivation is actually done. It's not difficult, but it's a bit tedious that how to find out this. The problem here is that, okay, you have a previous neuron also. So let's call, okay, you have this as the final neuron. We calling it the pth neuron, and here you have the tth neuron. And also pehle you have another neuron. Let's call this as the uh, let's say the q neuron. So Q neuron और T neuron भी आपस में किसी weight से connected है. So let's call this as WQ. So अब ये वेट तो डायरेक्टली एरर की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इस वेट को आप डायरेक्टली एरर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. द रीजन इज दैट देयर इज एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन हियर. ओके, एन इंटरमीडिएट न्यूरॉन इज प्रेजेंट हियर. तो इसलिए अगर मैं इस वेट को एडजस्ट करना चाहता हूँ, I'll have to find out the partial derivative of error with respect to this weight. And this weight, which is WQ, is not directly expressible in terms of error, क्योंकि उसके दरमियान एक W, let's say WP भी आ रहा. So what is done here is that you express this indirectly. So we'll say that WE, partial E with respect to partial Q, can be expressed using a chain rule. So WQ can be expressed in terms of WP, and WP can be expressed in terms of E. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू Q हम निकाल सकते हैं. Okay, so that can actually be calculated. For example, I can actually write down this expression. I can say that partial E with respect to WP, I can calculate this, and then I can actually calculate this expression also. ठीक है, क्योंकि P और Q आपस में WP and WQ are directly connected through a single neuron. Therefore, this expression can be developed. ठीक है, और E और P जो हैं they are directly connected, तो ये partial expression भी आप कर सकते हैं. तो this is what you call as the chain rule. ठीक है जी. तो आप इस chain rule के principle को adopt करते हुए you can actually find out this expression partial E with respect to partial WQ. ठीक है, तो इसी तरह से लेट्स से कि अगर मेरे पास एक न्यूरॉन, लेट्स से एक न्यूरॉन 1 है, वो कनेक्टेड है न्यूरॉन 2 के साथ, फिर वो कनेक्टेड है 3 के साथ, फिर वो कनेक्टेड है 4 के साथ, फिर वो कनेक्टेड है लेट्स से 5 के साथ. यहाँ पे आपके पास फाइनल आउटपुट आती है. यहाँ पे आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स से कि ये W12 है, ये W23 है, ये W34 है, ये W45 है. ओके, सो आई कैन एक्सप्रेस W1 2 in terms of error using this chain rule. ठीक है, और वो कैसे होगा? So I can say that partial E over partial W1 2. This can be partial E over partial W45 times partial W45 times partial 34 times partial 34 23 and partial 23 over partial W1 2. So you can see that this is what the chain rule will help you out. So so what happens is that this cancels out with this, and this cancels out with this, and this cancels out with this, and ultimately we get this expression which is representing this partial representation. So this is what you call as the chain rule. ठीक है, so जो back propagation का जो crux है, that is the chain rule. So if you can understand what chain rule is, you can understand what back propagation is. So इसकी जो complete derivation है, of course we will not be testing you on that complete derivation, but I can
you can go through the tutorial and some of the videos that I've uploaded. So उसमें you can understand the crux of this back propagation algorithm. So the idea here is कि जब आपने output न्यूरॉन से लेनी है और या न्यूरल नेटवर्क से लेनी है तो आप फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं. दैट मीन्स कि आपकी इनपुट वेट से मल्टीप्लाई होती हैं और फिर अगले न्यूरॉन और फिर उससे अगले न्यूरॉन एंड अल्टीमेटली यू गेट योर आउटपुट. तो वहाँ से आप आउटपुट निकालते हैं. दिस इज व्हाट यू कॉल एज ए फॉरवर्ड पास. और जब आपने वेट एडजस्टमेंट करनी है तो आपने एरर को इसी तरह से बैकवर्ड प्रोसेस करना है. दिस इज व्हाट यू कॉल एज द बैक प्रोपगेशन. Okay, so that's the basic concept behind multi-layered perceptrons and multi-layered networks. Iski derivation mein, if you have any problem, you can write down to me or you can write down to any of the TAs and you will find out isko conceptually. So if you understand the concept, I think that should be enough at this level. So once the concept is known, then you can easily implement that. There shouldn't be a problem. So uski derivation, agar aap, if you can go through the derivation, I think I uploaded a video on this. I'll just check it. If there isn't, then I'll upload it again. That explains step by step process how these derivations are actually done. Otherwise, you can also have a look at the link which I've given you on neural networks from that MIT course. That also explains you the derivation part. So we'll not be looking at the derivation part here because you in some future courses you will be looking at the derivation part also. Right. So here I'll touch upon some basic things before we move on to the next topic, and that is there is an important, simple, basic question regarding that how neural networks are different from regression and how, say, for example, logistic regression is different from the type of discussion that we are having now. In case of, I mean, just to recap, regression is primarily used to predict a value, whereas the neural network that we are using or that we are trying to develop, that neural network actually is used for classification. It's not predicting a value. In fact, it's actually doing some sort of classification. So if you have multiple categories of outputs, a neural network would give you that output category rather than a value. Say I gave that example earlier also, that if you want to predict the salary of a person based upon the age and the experience and all that stuff, you can use regression in that case. But if you want to categorize whether a person is, say, a good employee or a bad employee, I mean, just for the sake of an example, you can use neural networks. Okay, there is one other thing that you need to be clear about the conceptual part here, and that is neural networks are primarily used for, in fact, perceptrons are used for problems that are linearly separable. That means that the two classes can be separated linearly. In that case, perceptron learning can be used. But if you have non-linear or relationship or division between the two categories, in that case, you can try to use multi-layered perceptrons. Okay, so that's that should also be very clear in your mind. Okay, there is another say topic that is very closely associated with these topics, and I'll just give you the concept of that rather than going into the details. You can get the details from the machine learning course when you will take that, and that is the SVMs. The SVMs are the support vector machines. Support vector machines are the concept of the support vector machine is again very similar to what neural networks are, but the performance of these, or the way that they actually
perform, that's a little bit different, but the basic concept is very similar. Okay, so what happens here is that, let's say I've got these two classes. Okay, then I'll just simply touch upon the concept here. So these are the two classes that you have got. I can separate out these two classes by drawing multiple decision boundaries here, and you know by now that perceptrons and neural networks generate these decision boundaries. So I can have a decision boundary, let's say of this form also, that separates out these two classes. Okay, so this is a decision boundary that separates out the two classes. And other decision boundary can also be drawn, which I'm showing here in this dotted line. This is also a decision boundary. Okay, so both of these are the decision boundaries, but one is a better decision boundary compared to another one. And you can well imagine which one is a better decision boundary. Obviously, the one with the dotted line is a better decision boundary. The reason for that is कि इसमें जो margin of error है, that margin of error is relatively low. Margin of error low क्यों है? क्योंकि both the classes are well separated or well away from this line. यहाँ से अगर मैं इसका जो closest point है एक cross class का, वो ये है. This is at this distance. ठीक है. और इधर से वो ये है, and जो zero class का या dot class का distance जो है from this line is this one. Okay. लेकिन अगर मैं सॉलिड लाइन देखूं तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस एट द टॉप और यहाँ पे इसका डिस्टेंस, both these distances from the boundary decision, so they are very close to this decision boundary. That means कि अगर थोड़ा सा डेटा नॉइजी होगा, अगर ये थोड़ा सा डेटा नॉइजी हो जाता है तो ये पॉइंट जो है वो उठ के इस क्लास में भी आ सकता है. ठीक है. So this is what you call as the margins. So margins. So what are the margins? The margins are primarily उन points, वो points जो कि boundary के करीब 3 points हैं, उनका distance from the decision boundary. Say for example, just to explain it again, यहाँ पे मेरे पास एक point है, यहाँ पे मेरे पास एक और point है, ठीक है, और एक line ये है मेरे पास. अब ये देखें कि इसके boundary, इस line का ये जो लाइन मैंने डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ की है, दैट सेपरेट्स आउट एक्स एंड द क्रॉस एंड द डॉट्स इजीली. लेकिन ये जो क्रॉस एंड डॉट्स का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन वो कम है कंपेयर टू अनदर सिचुएशन व्हिच इज लेट्स से हियर, जो कि मैं ये डॉटेड लाइन से शो कर सॉरी दोबारा से आई विल ड्रॉ इट अगेन हियर a little bigger so that you can understand this clearly. ठीक है. So here it exactly passes through the center. ठीक है. So ये जो distance है, this distance is what you call as margins. तो अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, ये सॉलिड लाइन, यहाँ पे मार्जिन इसका बहुत कम है क्योंकि इस लाइन से ये क्रॉस भी बहुत करीब है और ये डॉट भी बहुत करीब है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से ये रिलेटिवली दूर है. ठीक है. So these are called margins. So these are the margins. So what SVMs के अंदर क्या कर रहे होते हैं? SVMs के अंदर आप एक optimization method आप use करते हैं जिसमें SVMs, support vector machines, they maximize these margins. So वो ऐसी decision boundary find out करते हैं that maximizes these margins, right? So SVMs also find the decision boundaries, लेकिन वो decision boundaries ऐसी find out करते हैं that maximizes the margins. ठीक है. वो कोई भी decision boundary निकाल के नहीं देंगे, वो ऐसी decision boundary निकाल के देंगे जो कि margins को maximize करते हैं, right? So I hope this concept should be clear. The support vector machines complete derivation जो है वो obviously हम उसकी detail में नहीं जाएंगे, लेकिन you again are looking at the decision boundaries, and we know that the decision boundaries are primarily represented as the dot product as this expression. ठीक है जी. तो इसी तरह से यही expression जो है वो support vector machines में use होती है, लेकिन what happens is कि आप ये जो decision boundary को ऐसी जगह पे place करने की कोशिश करते हैं
कि दोनों क्लासेस के जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट्स हैं, राइट, वो उस डिसीजन बाउंड्री से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाए, राइट। दिस इज व्हाट यू कॉल एज मैक्सिमाइजिंग द मार्जिन्स। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो हैं वो मार्जिन्स को मैक्सिमाइज करते हैं। And generally support vector machines are used for binary classification, लेकिन ऐसे support vector machines भी available हैं जो कि these days जो कि multi class problems को भी solve कर सकते हैं, ठीक है। There is another thing that is very important, and let's just see कि वो क्या है। तो suppose मेरे पास एक problem है जिसमें I have a class circles key, and then around that I have a class of process, right? तो इस तरह से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस तरह से डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यू कैन फाइंड आउट कि दिस इज नॉट अ लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम। इसका मतलब परसेप्ट्रॉन लर्निंग तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डिसीजन बाउंड्रीज जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो कि न्यूरल नेटवर्क्स जनरेट करते हैं, उनको भी फाइंड आउट करना आपके लिए डिफिकल्ट है यहाँ पे, बिकॉज आप इन दोनों क्लासेस को सेपरेट आउट करना जो है वो लीनियर तरीके से तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो इवन इफ यू लुक एट द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, तो आप इसमें कहाँ से ऐसी कोई लाइन निकालेंगे जो कि मार्जिन्स को मैक्सिमाइज कर देगा, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास नहीं आती। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन यू, there is a principle which is called the transformation principle. So you transform in the data, okay? And you also sometimes you do this transformation through through applying some functions, and we call those functions as kernels. So we call this transformation a kernel trick. कर्नल ट्रिक से आप क्या करते हैं कि आप ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें x, लेट्स से आपके पास यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, सो यू हैव गॉट x1 here and you have got x2 here, so it's a 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। अगर हम इस 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को हायर डायमेंशंस में ले जाएं, ठीक है, तो उस सूरत में वी कैन सी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों सेपरेट आउट, ठीक है। बट अगेन दैट्स एन एडवांस कॉन्सेप्ट, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स के वो ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करते हैं, लेकिन आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया of this the type of transformation। kernel trick की हम बात नहीं करेंगे, and a type of transformation that could easily be done, okay। if you look at this data you can see that I can draw a circle around one class, I can draw a circle here, right? So that means कि linearly तो separable ये नहीं है, लेकिन एक circle जो है of a given radius from the center, and let's call this R, अगर इस circle के अंदर है तो ये एक क्लास है और सर्कल से बाहर है तो दूसरी क्लास है, ठीक है। and if I rotate this, I mean if I rotate this line 360 degrees, at every angle I'll find कि at this radius inside this circle जो कि of radius R है, there is one class, and outside the circle there is another class, right? So that tells me कि अगर इसकी मैं coordinate transformation कर दूं, instead of using x1 and x2, अगर मैं इसमें let's say ये देख लूं कि यहाँ पे मैं रेडियस ले लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंगल ले लूं, so for a given radius, let's say कि for a given radius let's call it r1, and let's say कि ये भी r1 ऊपर भी, so for a given radius r1 यहाँ पे एक vertical line आएगी, which would mean कि for any angle at a radius of r1, inside this r1 you have this class and outside you have crosses,
right? And you can see here कि जैसी मैंने उसको रेडियल कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से निकाल के उसको मैंने एक्स एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है विद द रेडियस, और वाई एक्सिस को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द एंगल। अब आप ये देखें कि ये दोनों क्लासेस को जो है ना सेपरेट आउट कर सकते हैं। So the idea here which I want to present here is that if you have got some data जो कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लें किसी और फॉर्म में तो वो लीनियरली सेपरेबल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए डेटा प्री प्रोसेसिंग इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। इस तरह की आप प्री प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म दिस डेटा इनटू सम फॉर्म, ठीक है। एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट। आई मीन दिस वुड एक्सप्लेन यू के डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सो x1 x2 को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बजाय उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें एक एक्सिस मेरा रेडियस बता रहा है, दूसरा एक्सिस मेरा एंगल बता रहा है। एंड यू कैन वेरी इजीली सी कि फॉर ऑल एंगल्स एंड अ गिवन रेडियस within this circle you have one class। तो अगर इसको मैं इस तरह से प्लॉट कर लूंगा तो ये लीनियरली सेपरेबल है। अब मैं इसका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है, इसका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर इसी डेटा को मैं 3 डायमेंशंस में, फर्ज करें ये टू डायमेंशन प्रॉब्लम है, यानी एक्स एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर मैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट भी अगर इसमें मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे सारे क्रॉसेस जो है ना वो इधर हों और मेरे सारे डॉट्स जो हैं वो सेंटर में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि एंड दैट वुड बी बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर कोऑर्डिनेट व्हिच इज द जी कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं इन दोनों क्लासेस को सेपरेट आउट कर सकता हूँ, तो अबव दिस पॉइंट एंड बिलो दिस पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज डन व्हिच इज primarily done through kernel ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो आप करते क्या हैं कि आप एडिशनल उसमें कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हायर डायमेंशंस के अंदर ये डेटा सेपरेबल है या नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू कि दिस कॉन्सेप्ट is bit advanced concept, so that is something that you will be studying in machine learning, जहाँ पे SVMs जो है ना वो आप उसको देख सकते हैं। तो this is the kernel trick। So the kernel trick is primarily data transformation, इसके अलावा और कुछ नहीं है, okay। And the concept of the data transformation is I've already given you here। So this is the type of data transformation that would take place, right? So I think the amount of discussion that we wanted to have on neural networks and support vectors on the neural networks and the some advanced concepts, I think this level of discussion should be enough. Now, when you will implement this neural network backpropagation algorithm, खास तौर पे, so you will understand the concepts in somewhat more details. So if there are any questions, I mean, I'll be more than happy to take those questions. If you have any questions, आप अपने माइक खोल के भी कर सकते हैं और आप जो हैं वो जो है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं before we move on to the next part, ठीक है जी। So you are allowed to like unmute your mics and you can ask if there is anything that you have in mind before we move on, right? Okay, ठीक है। So if there isn't anything, then we can like move on to another discussion,
And this discussion is actually on another type of learning techniques that are used in artificial intelligence these days, and they're used quite commonly. And we call such techniques as knowledge-based systems. Okay, so we'll call such systems as knowledge-based systems. So we'll have some discussion on knowledge-based systems as well. Okay, so far we have discussed statistical learning. Okay, and now we'll talk about knowledge-based systems. Okay. Knowledge-based systems are primarily systems that okay, so let me just recap. Data statistical learning में क्या होता है? Statistical learning में ये होता है कि you have the data with you और data से आप directly कोई ना कोई model learn कर लेते हैं, right? जैसे आपने neural network को learn कर लिया, उसके weights को learn कर लिया, ठीक है? तो आप direct model learning के ऊपर चले जाते हैं. Knowledge based systems के अंदर ऐसा नहीं होता. Knowledge based systems के अंदर आपके पास data है, आप डेटा से रूल्स को लर्न करते हैं, राइट? और फिर उन रूल्स को आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं. ओके, सो दैट मीन्स दैट यू फाइंड आउट एसोसिएशंस हियर, राइट? एंड दीज एसोसिएशंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रूल्स. ओके, these associations or these rules, they are implicitly present in the model. Explicitly model के अंदर present नहीं होते, implicitly present. Whereas knowledge based systems क्या करते हैं? Knowledge based systems आप डेटा से रूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, दिस कुड बी अ मैनुअल प्रोसेस, ठीक है? आप खुद से रूल्स दे सकते हैं. आपको प्रॉब्लम का अंदाजा है तो आप रूल्स खुद से जनरेट कर सकते हैं, या आप रूल्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन जनरेट दीज रूल्स ऑटोमेटिकली एज वेल, ठीक है? ऑटोमेटिक रूल जनरेशन आप कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक रूल जनरेशन के लिए आपको ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस हैं और ये जो रूल बेस्ड अप्रोचेस हैं, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है? सो यू हैव टू हैव हाइब्रिड सिस्टम, सो यू कंबाइन दीज टुगेदर मेथड्स. तो आप रादर देन के मॉडल लर्न करें डेटा से, आप डायरेक्टली रूल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं डेटा से, ठीक? और फिर उन रूल्स को आप नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आर ऑल अबाउट. सो आवर नेक्स्ट डिस्कशन वुड बी ऑन नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, के नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, राइट? नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स में प्राइमरीली ये होता है कि आपके पास कोई उस तरह से मॉडल डिफाइंड नहीं है, आपने कोई वेट्स लर्न नहीं करने हैं, आपके पास कोई लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है. आप प्राइमरीली करते ये हैं कि आप डेटा से कुछ रूल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और अगर कुछ रूल्स आपको पहले से पता है तो आप उनको मैनुअली सिस्टम में एंटर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू डेवलप अ सिस्टम दैट वुड आंसर द क्वेश्चंस, तो अगर आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का आपको पहले से पता है, so you can add those questions to your system and their answers manually, ठीक है? और फिर ऑटोमेटिक जो जो आंसर्स ये क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं, उनको लर्न करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने सिस्टम के साथ एक ऑटो लर्निंग मैकेनिज्म अटैच कर सकते हैं. एंड व्हेन यू अटैच दैट ऑटो लर्निंग मैकेनिज्म विद योर सिस्टम, व्हाट वुड हैपन इज कि you can enhance
this rule set that you have got here. ठीक है. So chatbots जो हैं, chatbots के अंदर you see that most of the time what happens is that you start with the basic knowledge, and then while communicating these chatbots actually learn. ठीक है. And that is an example of auto rule generation or auto learning of rules. ठीक है. So how to respond to questions, right? So that is something that has to be implemented in chatbots. ठीक है. तो या तो responses to the questions could be hard coded. That is, either you can manually add some responses to some typical questions, FAQs type जो होते हैं, so you know them, so you hard code them. And but if you want to make it a real chatbot that has some sort of an AI in it, here you will have to integrate this mechanism of finding out associations or rules with some algorithms that could automatically extract information. Okay. And then develop or enhance the already present FAQs in the system by adding more questions and their answers. ठीक है. तो फर्ज करें आप एक ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं जो कि वेब क्रॉल करे. आपने कोई क्वेश्चन किया है and the chatbot doesn't know the answer to that, so the chatbot could actually crawl crawl the web and try to find out a reasonable response to your answer. ठीक है. And of course, when the question comes in at that particular time, an immediate answer won't be possible, but a learning system which is based on knowledge-based systems would try to find out that and keep it for future use. Say एक नया question आता है, वो crawl करता है, उसका आंसर डिग आउट करने की कोशिश करता है, and then puts it into a set of rules that, or the puts it into its memory. Next time अगर ये question आएगा, इससे मिलता जुलता कुछ question आएगा, तो I'll answer that. So if let's say कोई chatbot है और chatbot को किसी ने ये question पूछा कि where is Pakistan located, ठीक है, and if the chatbot doesn't know the answer to that, so automatic algorithms could be developed which could automatically try to identify the answer to this question and add it into their memory for future use. Okay, so this is and that can actually be presented in a learning system through rules. So rules here would mean that if this question is asked, then this answer should be given, and if this question is asked, then this answer should be given. Okay, so that is a sort of a rule structure that we have. Okay, so these rule-based systems or knowledge-based systems are used these days, but previously manual rules were added manually, but these days auto rule generations algorithms have been developed which combine the rule-based systems or knowledge-based systems with statistical learning systems. Okay? So you'll find out a lot of algorithms around that combines genetic algorithms and neural networks and knowledge-based systems all together. Okay? So you'll find algorithms जिसमें genetic algorithms भी use हो रही हैं, neural networks भी use हो रहे हैं और knowledge-based systems भी use हो रहे हैं, right? न्यूरल नेटवर्क्स में आपने स्टडी किया है कि आपने वेट्स को लर्न करना है, ठीक है, वेट्स की एडजस्टमेंट्स करनी है. अब वेट्स की एडजस्टमेंट्स के लिए यू नो कि देयर इज अ परसेप्ट्रॉन रूल दैट इज अवेलेबल और बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम अवेलेबल है न्यूरल नेटवर्क्स के केस में, लेकिन जेनेटिक एल्गोरिथम्स को भी यूज़ किया जा सकता है वेट्स को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है. तो जेनेटिक न्यूरो सिस्टम्स आते हैं जो कि हाइब्रिड सिस्टम्स की फॉर्म है, जहाँ पे आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स को और न्यूरल नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं. तो आप कंबाइन इस तरीके से करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स के वेट्स को आपने सर्च करना है ना, और अप्रोप्रिएट वेट्स को आपने सर्च करना है, ठीक है. तो रादर देन डूइंग इट
through a mathematical approach which is the gradient descent approach, आप या least squares approach, आप क्या करते हैं, आप genetic algorithms को use कर सकते हैं. Genetic algorithms are also algorithms that are used for searching. ठीक है. सो एक सर्च स्पेस के अंदर आपने एक ऑप्टिमल आंसर निकालना है. तो इसी तरह से आप न्यूरल नेटवर्क्स और जेनेटिक एल्गोरिथम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं. अच्छा, और केबीएस के अंदर एज आई टोल्ड यू आपको रूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो रूल्स आप जो हैं वो जेनेटिक एल्गोरिथम्स और न्यूरल नेटवर्क्स को कंबाइन करके जनरेट कर सकते हैं. तो केबीएस नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स में जो मैनुअल रूल्स हैं जो कि प्रीवियसली यूज़ किए जाते थे, अब उन मैनुअल रूल्स को आप रिप्लेस कर देते हैं. मैनुअल रूल्स एक्सट्रैक्शन को आप रिप्लेस कर देते हैं विद ऑटो रूल एक्सट्रैक्शन. ठीक है. सो दिस इज हाउ this goes, and this leads us into a very sort of a rich domain of hybrid systems, right? So what we'll do next is that we'll be talking about the knowledge based systems, and especially within these knowledge based systems we'll talk about very say at a very say crude level, or at a very high level of systems that are based upon fuzzy logic. ठीक है. Fuzzy logic is a concept that is used in order to handle uncertainties or vagueness present in the system. ठीक है. Uncertainty और vagueness को हैंडल करने के लिए in the system fuzzy logic को use किया जाता है. So we'll be looking at knowledge based systems that use fuzzy logic. ठीक है. फजी लॉजिक का बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ. मैं नेक्स्ट टाइम व्हेन वील मीट वील गो इनटू द डिटेल्स. बेसिक आइडिया ये है कि आई थिंक ऑफ अ रूल एंड आई से दैट ओके, a problem as I told you is if I want to find out whether a person is a good employee or not, so I say that if person is punctual, ठीक है ना, I'm using text to represent a rule here. Obviously आप इसको जो किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है. लेकिन I'm just using the textual form here so that you can better understand. So if the person is punctual and the person completes the task in time, okay, तो फिर हम कहते हैं कि this person is, let's say, a good employee, right? So this is a sort of rule, and I can represent this rule in multiple ways. Okay, I can use let's say first order logic to represent this rule, right? I can actually use even I mean other forms also to represent this logic in this rule. As I told you, first order logic भी आप use कर सकते हैं, but I can also have fuzzy representation of this rule provided that the rule is expressed in some fuzzy form, vague form. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर इस रूल को इस तरह से चेंज कर दूं, अगर मैं ये कहूँ कि इफ अ पर्सन इज मोस्टली पंक्चुअल एंड द पर्सन often completes his task in time, then the person is a good employee. अब यहाँ पे मैंने कहा है कि of almost punctual and often का word मैंने यूज किया. Now that adds uncertainty. ठीक है. ये जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, एंड फॉर दोज who don't have any idea about first order logic, we'll probably in the next session we'll have this very simple discussion on first order logic as well, that what is this first order logic and how can this be used, और उसमें आप कैसे प्रोसेस करते हैं. So need not to worry about this part. So you can represent it in the form of the first order logic that we'll be studying in our next discussion. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में या जो आपके पास and these are also
first order logic, they are also called symbolic representations. Okay. Symbolic representation of knowledge. So this is the knowledge that you have, and you can have a symbolic representation. Okay. So I can I can write it down in this way. I can say that if a person X belongs to, okay, a category of say uh, punctual people, and same person X also completes the task, then the person is uh, a good employee. Okay, so I've used some symbols here to represent this knowledge, right? But यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं इसको कह देता हूँ ऑलमोस्ट पंक्चुअल, और यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि द पर्सन इज ऑफन कंप्लीट्स द टास्क, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन आ जाती है. दिस इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे P is a symbol that I am using for punctuality, C is a symbol that I am using for completeness of task, and S is basically a symbol that I am using for a person. ठीक है, so X would basically be an element from a set of people. This would be an element from the set of timings. So a person could be punctual, non-punctual, and stuff like that. And C would be, let's say an instance from task completion, and the person could complete a task and the person could not complete a task. So if the person completes the task, I can say C. If the person does not complete the task, I'll say that okay, this delta C. So delta C and C are the representation. So if I want to write down a rule which says that if the person does not complete the task in time, I can replace this C with delta C. Okay, and if I say that the person is not punctual, I can say that X belongs to not punctual. Okay, so you can see that this works very well in case of a binary situation. लेकिन जब ये मैं almost और ये qualifiers use करता हूँ, almost या often, उस सूरत में I am unable to represent or find a rule that could represent this knowledge, जिसमें vagueness है, जिसमें uncertainty है. ठीक है. So for that, the concept of fuzzy is actually used. Okay. And we'll initially what we'll do in our next discussion is that we'll see that how the symbolic part, which is the first order logic part, works. आप knowledge को first order logic की form में represent करें, और फिर वहां से आपने conclusions कैसे draw करने हैं ये देखेंगे. और फिर हम ये देखेंगे कि उसी नॉलेज को अगर हम फजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आपने कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करें. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट वी विल बेसिकली बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम. ओके, so I think this is enough for today. We'll basically inshallah meet next time again to discuss this in somewhat more detail, right? So now if there are any questions, you can ask those questions. Otherwise we can end our discussion today. Okay. Okay, then I think we should begin our discussion now. Okay, so thank you very much. Inshallah we'll meet again, and take care of yourself, and inshallah next time we'll discuss in somewhat more detail that how this actually works out.
Sir, I had a question regarding tomorrow's quiz. Nothing has been announced yet so far, except that it's just happening tomorrow. Sorry, say it again. Sir, there's a quiz tomorrow, right, for AI, but we don't know anything about it yet. As Uh, in, they did announce the date, but they didn't give us anything else. Regarding the contents. Yes, sir. Okay. I'll just check that out and I'll ask them to that. It might be a repeat thing that you have already done earlier because there wasn't enough. I mean, the TAs didn't actually do it consistently across different groups. ठीक है, तो शायद Oh, वो repeat activity है इसलिए उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन anyway I'll just let them know कि they'll announce that कि उसमें क्या आना है. ठीक है जी. right, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. That is. Hafiz.